हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सेप्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जब जब भी प्रोग्रामर कोई प्रोग्रामिंग करता है तो उसको यदि एरर्स के साथ डील करना है तो वो किस तरीके से करेगा। फॉर दैट ही हैज़ टू डू द एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो हम एक्सेप्शंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नंबर हमें समझना पड़ेगा कि एक्सेप्शंस क्या होते हैं, है ना? तो आपने जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं, आपको प्रोग्रामिंग करते टाइम पर कुछ एरर्स आती हैं। उन एरर्स को हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं ना। फर्स्ट वन इज़ सिंटैक्स, सेकंड वन इज़ रन टाइम एरर्स। तो सिंटैक्स एरर्स आर बेसिकली फॉर दैट द प्रोग्रामर इज़ द रीज़न। यदि प्रोग्रामर ने जो प्रोग्रामिंग के सिंटैक्सेस हैं उसको फॉलो नहीं किया हुआ है और वो अपना कोड लिख रहा है, तो ही विल बी गेटिंग द सिंटैक्स एरर। व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूँ here print or here simply hello. So when you run this code, you are getting one error missing parenthesis in call to print. Did you mean print hello? What does it mean? एक्चुअली जब भी प्रिंट फंक्शन है, उस प्रिंट फंक्शन के अंदर हम हेलो काइंड ऑफ स्ट्रिंग डेटा पास कर रहे हैं। सो इट इज एक्सपेक्टिंग कि आप यहाँ पर दो ब्रैकेट्स लगाएं। सो व्हेन यू रन दिस कोड अगेन, यू कैन फाइंड द हेलो इज प्रिंटेड ओवर द स्क्रीन। मतलब as a programmer, when I'm doing the programming over this Python, so I have to take care of all the syntaxes that are required to do the programming, है ना? तो जिसके कारण सिंटेक्स के कारण जो एरर आई है उसको हमने क्या बोला है? सिंटेक्स एरर। बट समटाइम्स व्हाट हैपन, द प्रोग्रामर हैज डन his task properly, he has written a code perfectly, but when the program get executed, then Python virtual machine generates some errors. It will give you there are some errors in your program. तो वो जो एरर्स होती हैं वो कहलाती हैं रन टाइम एरर्स, जो कि प्रोग्रामर की मिस्टेक के कारण, सिंटैक्टिकल मिस्टेक के कारण नहीं है, वो है प्रोग्रामर के लॉजिकल मिस्टेक्स के कारण, है ना? तो इस टाइप की एरर को हम रन टाइम एरर्स भी बोलते हैं और इस टाइप की एरर्स को हम एक्सेप्शंस भी बोलते हैं। सो व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली? हम एक कोड के फॉर्म में देखते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि एक मैं लिखता हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर and for this input I'm typecasting it into the integer to the valid data, and here I have written like enter the valid data. Now it's close and I print x. So when I run this code, can you see the syntactically it is working fine, and when I pass the 10 values here, it gives you the output as a 10 because I'm just printing x by taking the input from the user. What's here? When I run this code again and I write like this, so can you see you are having this value error, which is a runtime error and kind of exception generated by the Python virtual machine because the expected data that should be over the base 10 and I'm giving the string input. तो लॉजिकली हमें इसको वही डेटा देना चाहिए जो डेटा यूजर से इंटेंडेड मांगा गया है उस कोड को करते टाइम, है ना? यदि हम वो डेटा नहीं देते हैं तो हमारे पास क्या होता है? एक रन टाइम जनरेट होती है एरर और एक लॉजिकल एरर जनरेट होती है। फॉर दैट लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर वी से द एक्सेप्शंस। पर्टिकुलरली इन पाइथन, if I define the exception, what what can we say about the exception? So exception is nothing, it's a kind of event which deviate the flow of program. कहीं न कहीं एक ऐसा अनवांटेड इवेंट हो रहा है जो हमारे नॉर्मल जो प्रोग्राम की नॉर्मल फ्लो को कहीं न कहीं वो प्रॉब्लमैटिक कर रहा है, इवन दो माय प्रोग्राम इज सिंटैक्टिकली करेक्ट। तो जब मैं इस एक्सेप्शन को यदि मैं एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करता हूँ और डिफ़ॉल्ट नेचर में यदि पाइथन वर्चुअल मशीन के पास ये एरर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ द एक्सेप्शन, तो वो आपको एक्सेप्शन के फॉर्म में ये एरर्स को देंगी, है ना? बट
but I don't want to show these kind of errors to the user, and I want to give some meaningful message to the user on when these kind of errors are generated by the Python virtual machine. So the exception is the event, and when I want to give the meaningful result to the user, that we call a exception handling. So I'm just handling this exception and give some meaningful data to the user. That, for example, in this case, instead of taking this value error, क्योंकि हर यूजर जो है आपका वो प्रोग्रामेटिकली स्ट्रांग नहीं हो सकता है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको एक्सेप्शन को मैं हैंडल करता हूँ, मैं उससे बोलता कि इंस्टीड ऑफ दिस वैल्यू एरर आई कैन राइट देयर, प्लीज एंटर द वैलिड इनपुट दैट शुड बी द इंटीजर ओनली. Okay, so for that, what I need to do, I have to take care of the exception and I have to handle the exceptions. So this overall concept is known as the exception handling. When I talk about a exception in Python, every exception is nothing, it's a class. Whenever any event or exception generated, uh, Python virtual machine throw exception object. इस exception object को ही हमें डील करना होता है, and we handle the exception with the help of this object only. तो यदि let we see the complete hierarchy of exception in the Python. So you can see the base exception is the topmost hierarchy of the exception classes in Python. उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं base exception group, generator exit, keyboard, system exit, and finally you will be getting the exception where large number of exceptions are available, है ना, and even the warnings are also the part of these exceptions, है ना. तो हमें इन exceptions को handle करने के लिए we should be able to understand what kind of exceptions are there, है ना, assertion, attribute, buffer, है ना, import, memory, name error. You find you have seen a various errors during our programmings, what we have done till now in the videos. तो वो एरर्स कहीं ना कहीं जब रन टाइम पे एरर्स जनरेट हुई हैं हमारी, उन एरर्स के नाम पर ही हमारे लिए उन एक्सेप्शन की क्लासेस दी हुई हैं, एंड वी विल बी हैंडलिंग एक्सेप्शन बाय नोइंग दीज क्लासेस ओनली. ये वो सारे के सारे एक्सेप्शंस हैं जो कि पाइथन में बिल्ट इन एक्सेप्शंस हैं, है ना. सो द बिल्ट इन एक्सेप्शंस इन द पाइथन इज अवेलेबल इन दीज फॉर्म्स एंड अंडर दिस हायरार्की. So base exception is the topmost class. Under the exception class, we will be having all kind of exceptions. Now, if I talk that how to handle this exception, what I need to do, so we have to take one concept here that we call a try except. Try and accept. So it is very much important to understand. To handle the exception, we are having we will be having the number of blocks, but just for the simplicity, we assume we are having the two blocks, that is the try and accept. Try block में हम क्या करेंगे? In the try block, we basically write the code which can generate the exception, or I will say the code under the risk of exception. And this except block will be writing a code that is required to handle the exception. What does it mean? Let me take one example here, and very simple example that we have seen previously. Suppose I'm having one code is here. I'm here writing a print the statement 1 as 1. Then I writing print 10 divided by 0. Then I write
print statement s2. So when I run this code, can you see the output is what? The output is the print statement s1. Then finally you are having the zero division error. But syntactically this code is correct. But the logical error is that you cannot divide by the zero. Otherwise you will be getting zero division error kind of exception. What is happening? If I am not handling this exception properly, my program flow is moving, but it is terminating abnormally. It's not working like that. What is the intended for this? तो हम क्या करेंगे? हम इस ब्लॉक का यूज कर कर एक्सेप्शन को हैंडल करने की कोशिश करेंगे, है ना? सो व्हाट इज इट? सपोज what was the intended code here that I write? Suppose here was the code try, और इस ट्राई के अंदर हमने सबसे पहले नंबर लिखा प्रिंट s1. लेट आई टेक दिस कोड फ्रॉम हियर. So under this try, we are having the code which is susceptible to the exceptions. हम देख पा रहे हैं कि ये वाला कोड जो है हमारा एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है. बट व्हाट इज हैपनिंग? आई नो वेरी वेल कि मुझे एक एक्सेप्ट ब्लॉक और लिखना है इस ट्राई के लिए, लेकिन मुझे ये भी पता होना चाहिए कि ये जो ब्लॉक है, जो एरर जनरेट हो रही है, जो एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है हमारा, वो व्हाट काइंड ऑफ एक्सेप्शन इज इट? तो मुझे पता है कि ये जो एक्सेप्शन था दैट इज अ जीरो डिवीजन एरर. सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन इज हियर zero division error, and I hit enter, and here I write print please do not use zero in denominator. When I run this code, the statement s1 is perfectly executed, but this statement has generated the exception. So the control move here, and we are having the output as a please do not use the zero in denominator. So what is happening? हमने एक्सेप्शन को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हैंडल करा, और उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के बाद हमने यूजर को एक वैलिड प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू एक वैलिड मैसेज दिया कि प्लीज जीरो आप यूज ना करें, क्योंकि मे बी पॉसिबल कि द यूजर इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस जीरो डिविजन एरर. दैट इज व्हाट द वे बाय विच वी हैंडल द एक्सेप्शन. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि मैं इफ आई पर्टिकुलरली टॉक अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, यदि मेरे पास एक प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम में मैं देखना चाहता हूं कि भाई मेरा जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है, या मतलब जो मेरा मूवमेंट है प्रोग्राम के फ्लो का, वो किस तरीके से है ना? सो लेट मी टेक वन एग्जांपल फॉर दिस. सपोज आई एम हैविंग दिस try block. I am taking this code here. Here I am writing the print statement 1, and I am having the print statement 2. Here we are having the S3. And here we all are having statement, suppose that is the statement 4S4. And finally we are having side the print statement that is S5. Let me check for the flow control. So suppose this is what the code which we are executing, and we are trying to do the exception handling in it. So what is happening? When I run this code, can you see the output is statement 1, statement 2, statement 3, and finally statement 5. What does it mean? We are having a proper flow of the statement
Like you can see here, statement 1 executed, 2 executed, and 3 executed. Actually, under this block, there were not any kind of exception. So this is not reached in this block. And finally, it reached to the S5. When this perfectly my code executed, I will say the program is executed successfully. No exception is here. It means that the program termination is, it's a perfectly successful or normal. It's not kind of abnormal termination. Now, what is happening? Suppose the exception raised at the statement 2. Suppose at the statement, instead of this statement, I am having this one. When I run this code, so can you see the output is? The statement 2 is generating the exception. So in the try block, the S1 will be executed first. But but uh, but you can see the movement of flow here from here. What is happening? This S1 is perfectly executed. This exception, after this exception, we are not able to reach to the S3. We are able to reach to the S4 because S4 is due to the exception handle. Now finally S5. So what is happening here? Although in this program we are having exception, but we could be able to handle the exception properly here, and corresponding exception block has been matched here. So this program is although having the exception, but this program is terminated successfully because we have handled the exception and we can control the flow of program. Now, if I talk about the third scenario here, seem like at the statement S2, if suppose we are having exception at the statement S3. So when we are having the exception at the statement 3, you will be finding statement 1 and statement 2 is printed there. And finally, if the exception is handled here, then S4 will be there. And finally, you will be having a S5. So again, if the program flow is going there and exception is handled properly, then you are having a normal termination of the flow of the program. But what is happening? Suppose I am having one error here, and instead of zero division error, let I take this value error exception here. So I have written here value error. But what is happening? Here I am taking this code which is generating the exception. I run this code. So can you see the output here? The output is S1 only. Rest of the code is not having the impact because this exception is not handled properly and the program is terminated with this error, that the zero division error, and this is also the exception, and it has not been handled, so it is not moved further. So the after S1 the error is there and the program cannot be moved further. So what is here? If in a try block there is any kind of exception that must be handled. If it is properly handled, the control flow will be in the normal termination. If it is not properly handled, the control flow will not be in the normal termination. So this is what the basic of the exception that we need to understand. Now, what is happening? Suppose here is the value error and I want to, suppose I take the zero division error. I'm taking this program here. Instead of this value error, I'm taking one division error here. One important point to understand here, यदि जीरो डिवीजन एरर आ रही है और मैं इस तरीके से उस एरर को लेके चल रहा हूं या मैं उसको हैंडल कर रहा हूं, क्या मैं इस एरर के मैसेज को भी प्रिंट करा सकता हूं यूजर के सामने, है ना? सो व्हाट यू नीड टू डू हियर, यू नीड टू टेक as message. You will be taking the zero division error, but you are also generating one message here. So what you will be writing? Simply, instead of writing your code, you will be saying exception
is generated and its description is here. So what is happening? I am just taking this message. When I run this code, you can see the statement S1 is printed there. The statement S2 has generated this one. So we are having exception, which is handled by the zero division error except block. And finally, it is giving you the message generated and here due to the division by error and S5. So again, we have handled the exception. The termination is normal. The statement S1 is executed here, but after that S5 is executed. One important thing, once from where the exception is generated, after that the try blocks statements will not be executed. So for this video, it's all from my side. Thank you.